Hello students, how are you? I hope you all are good and good going with your studies also, as you have enough time in your hand during this lockdown. Students, my today lecture is all about female reproductive system, that is gynoecium or pistil. Student, if you doesn't watch my previous lecture on male reproductive part, that is anther, then first go for this lecture and then come back to view this lecture. Right student? Students, in this video lecture I am totally describing you all about female reproductive system or organ of flower, that is pistil. Students, pistil is divided into three parts: stigma, style and ovary. Student, stigma, style and ovary, style and ovary. Right student, if we talk about stigma, then student, at stigma the pollen rejection or incompatibility take place. Pollen rejection or compatibility reaction takes place. Stigma may be dry or may be glandular. स्टिग्मा पे स्टूडेंट ग्लैंड्स हो सकते हैं, स्टिग्मा हमारी ड्राई भी हो सकती है. स्टिग्मा पे रिजेक्शन और कंपैटिबिलिटी पोलन की टेस्ट की जाती है. सिर्फ सेम स्पीशीज के पोलन ही उस स्पीशीज पे रिकॉग्नाइज हो सकते हैं, कंपैटिबल हो सकते हैं, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन कर सकते हैं और आगे पॉलिनेशन प्रोसेस को कर सकते हैं. बट स्टूडेंट, इफ दे आर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज देन पोलन रिजेक्शन टेक्स प्लेस और पोलन ट्यूब बनेगी ही नहीं. राइट स्टूडेंट? देन स्टूडेंट, आर नेक्स्ट पार्ट, दिस इज स्टाइल. स्टूडेंट, स्टाइल इज ऑफ टू टाइप. स्टाइल दो टाइप की होती है. वन इज solid style and other is hollow style. Student, through the style the pollen tube proceed and reach to the ovule पे पहुंचती है. स्टाइल का बहुत बड़ा रोल है. अगर हॉलो स्टाइल होगी तो इजीली रीच कर जाएगी पोलन ट्यूब, और अगर सॉलिड स्टाइल होगी तो थोड़ा सा टाइम टेक प्लेस होगा. राइट स्टूडेंट? नेक्स्ट पार्ट इज ओवरी. स्टूडेंट, इट इज swollen part present below the style. It is present on or embedded inside thalamus. या तो थैलेमस के ऊपर होगी या उसके अंदर embedded होगी. राइट स्टूडेंट्स? एंड it hold ovules inside it. They attached with placenta with funiculus. स्टूडेंट, ये प्लासेंटा सेंटर में रेड पोर्शन जिससे फनिकुलस के थ्रू एक ओव्यूल ज्वाइन है और यहाँ पे काफ़ी सारे ओव्यूल है. ये पूरा का पूरा हमारा ओवरी है. ओवरी के अंदर छोटे छोटे ओव्यूल्स जो फनिकुलस के थ्रू प्लासेंटा से ज्वाइंड है. राइट स्टूडेंट? नेक्स्ट स्टूडेंट, ओवरी इज क्लासिफाइड इनटू मैनी टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन कार्पल्स. if student, carpel is 1, if carpel is 2, if carpel is 3 and if carpel is many, then student
then student, the ovary is said to be monocarpillary ovary, monocarpillary ovary. Students, bicarpillary ovary, bicarpillary ovary, tricarpillary ovary, and multicarpillary ovary, multicarpillary ovary. Right, student? And student, classification: if carpels are free and carpels are united or fused, carpels are free and carpels are fused, then ovary is said to be apocarpus ovary, apocarpus ovary or syncarpus ovary, syncarpus ovary. Student, I think you understand this. Then now student, the after the ovary, ovules are present inside the ovary. We have to classify the ovules according to their shapes and curvature. Right, student? Classification of ovule according to curvature. Okay, student? Student, if the ovule embryo sac, chalazal end and micropyle, all three are present in a straight line. देखो student, straight line में all three are present in a straight line, then we said it as orthotropous ovule. What, student? Orthotropous ovule. If these three are present in a straight line. And student, if 180 degree curvature takes place, 180 degree curvature takes place in ovule, right, student, then the ovule is said to be anatropous. Student, third type of ovule is if the curvature is at 90 degree. Curvature is at 90 degree. Student, then said to be as hemitropous ovule. Hemitropous ovule. Right, student? And student, if the curvature is slightly tilted, but the embryo sac inside it is remains straight. एम्ब्रियो सैक में कर्वेचर में कोई चेंज नहीं है. एम्ब्रियो सैक के कर्वेचर में स्टूडेंट कोई चेंज नहीं है, सिर्फ ओव्यूल जो है वो हमारा स्लाइटली टिल्टेड है. देन दिस टाइप ऑफ ओव्यूल इज कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल. कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल. स्टूडेंट, if the curvature of ovule is also tilted and the ovule is also tilted, now student both are tilted, right, then the ovule is amphitropous ovule. Student, the last ovule is sarcinotropous ovule, in which the integument, the funiculus is in sarcinate form. It is coiled. Then sarcinotropous, we said it as, here I am write this, sarcinotropous ovule. Student, if funiculus is coiled, right, it is coiled, and here curvature in ovule, curvature in embryo sac, here curvature in ovule, and here 90 degree curvature, here
180 degree curvature, and here straight line. Right, student? There are the 6 type of ovule depending upon the curvature. Note it down. Then I start next classification on the basis of integument. Students, as you know that uh, outside the embryo sac there is two leaf-like structure which are known as integuments. If these integuments are absent, the ovule is ategmic. If these integuments are one, then it is said to be as monotegmic. And if two integument are there, then bitegmic. Student, in ategmic it is generally found in pteridophytes. Pteridophytes, student, generally found in pteridophytes. Monotegmic generally found in gymnosperms. Gymnosperms. And bitegmic generally found in angiosperms. Okay, student. Now, student, according to the Nucellus, the ovary may be crassinucellate and tanninucellate. Student, crassinucellate if nucleus is many layered. Nucellus is multi-layered, and if nucellus is single layered, then it is tanninucellate. Right, student? Next topic is we have to discuss about the development of megasporangia. Right, student? As a student, we discussed in the development of microsporangia. I told you there that archisporial cell, one of the epidermal cell convert into the archisporial cell, convert into archisporial cell, and this archisporial cell divided into two cells, one parietal cell and other is sporogenous cell. This parietal cell divide to form nucellus. ये बाहर का पार्ट पैराइटल सेल बनाएगा. राइट, स्टूडेंट? बट स्पोरोजिनस सेल विल फॉर्म एम्ब्रियो सैक. अंदर का एम्ब्रियो सैक स्पोरोजिनस सेल बनाएगा. स्टूडेंट, आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज eusporangiate development. Eusporangiate development means when one cell divided into two cells and from the hypodermal cell. Hypodermal cell is the cell which is present in below. The hypodermal cell, from the hypodermal cell the embryo sac developed, then this type of development is eusporangiate development. Right, student? अगर हाइपोडर्मल सेल से हमारा एम्ब्रियो सैक डेवलप करेगा तो ऐसी डेवलपमेंट को यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट कहते हैं. एंड यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट इज रिपोर्टेड ओनली इन एंजियोस्पर्म. राइट, स्टूडेंट? ओके, नाउ स्टूडेंट, I am going to discuss with you that this is our
this is our archisporial cell which is present inside, and this archisporial cell becomes divided to produce, this is archisporial cell, right student? Archisporial cell becomes divided, and this is now our integuments, divided to produce one parietal cell which is this, and four cells which are sporogenous cell, okay student, and this is parietal cell, and these walls are integument. Student, in case of megasporogenesis, not all four megaspores or sporogenous cell develops functionally. सारे स्पोर डेवलप नहीं करते, 3 spores become degenerate and only the last spore becomes functional and form embryo sac. लास्ट स्पोर ही एम्ब्रियो सैक बनाएगा, राइट स्टूडेंट? अभी क्या है कि I told you that the last spore form embryo sac and the other becomes degenerate. ये डिजेनरेट हो रहे हैं, बहुत छोटे हो गए हैं, अब डिसॉल्व हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और ये लास्ट स्पोर ने हमारा एम्ब्रियो सैक बना दिया। एम्ब्रियो सैक में हमारे 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पे इस तरफ हमारे एंटीपोडल्स हैं, और यहाँ पे हमारा साइनर्जिड्स और एग सेल। स्टूडेंट, एट स्टार्टिंग दिस इज 2 न्यूक्लियस स्टेज एंड 7 सेल्ड स्टेज। 7 सेल्स होते हैं, 2 न्यूक्लियस होते हैं, बट दिस 2 न्यूक्लियस आर फ्यूज्ड आफ्टर एंड फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, राइट स्टूडेंट? Student, this type of development is generally reported in polygonum plant, and this type of development is in 80% angiospermic plant. 80% angiospermic plant में यही डेवलपमेंट होती है। ऐसे ही हमारा मेगास्पोर डेवलप करेगा, 3 डिजेनरेट हो जाएंगे, लोअर मोस्ट जो होगा फंक्शनल होगा, राइट स्टूडेंट? और इसी तरीके से डेवलपमेंट होगी, 7 सेल स्टेज पे हमारा बनेगा एम्ब्रियो सैक। एंड स्टूडेंट, इसको रिपोर्ट किया था पी महेश्वरी, विच इज अ एम्ब्रियोलॉजिस्ट, अ साइंटिस्ट। इन्होंने इस डेवलपमेंट को रिपोर्ट किया था। पॉलीगोनम में 80% एंजियोस्पर्म में ये डेवलपमेंट होती है, और इन्होंने इस डेवलपमेंट का नाम दिया मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, राइट स्टूडेंट? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। नोट इट डाउन स्टूडेंट फास्ट। Okay, now student, I am going to discuss with you that how many cells are present in this embryo sac and what are the functions of each and every cells. Students, this is our embryo sac. Here antipodal cells are present, and here 2 synergids with egg cell is present, and they are 2 polar nuclei which ultimately becomes fused to form primary endospermic nucleus. Students, only egg cell and this primary endospermic nucleus has a fate जिसकी ज़रूरत बाद में होती है, and student, rest of the cells are dissolved, disintegrate and provide nutrition to the egg cell. खुद को डिसॉल्व कर देंगे और एग सेल को न्यूट्रिशन दे देंगे। स्टूडेंट्स, these synergids they provide a place for, एक सीट प्रोवाइड करते हैं, एक जगह प्रोवाइड करते हैं फॉर एग सेल के लिए। synergids
हैज़ फनिक्यूलस, साइनर्जिड्स के पास फनिक्यूलस होती है स्टूडेंट, फनिक्यूलस, फनिक्यूलस नहीं, फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म apparatus through which they absorb nutrition, they absorb nutrition and provide it to egg cell, egg cell को देंगे nutrition, hence they are also known as helper cell, इनको helper cell भी कहते हैं students, they are also known as helper cell, they provide a seed to egg cell, they has filiform apparatus which absorb nutrition and provide to egg cell, hence known as helper cell also. And student, one of the synergids become disintegrate after the entry of pollen tube, right? One synergid disintegrate during pollen tube entry, student. Next is our antibodal cells, right? If I told you something about antibodal cells, your antibodal cells has antibodal cells have an organ nearby known as obturator, it secretes chemicals or calcium which guide the entry of pollen tube की एंट्री को गाइड करने का काम एंटीबोडल सेल्स के पास एक ऑब्ट्यूरेटर प्रेजेंट होता है, वो करता है ताकि पोलन ट्यूब राइट डायरेक्शन पे एंट्री करे, राइट स्टूडेंट? स्टूडेंट्स, your these two polar nuclei fuses and converts into primary endospermic nucleus, and this primary endospermic nucleus fused with one male gamete to produce endosperm. And student, due to the presence of three nuclei, two polar nuclei here and one nuclei of male gamete, the endosperm become a triploid structure, okay student? And student, here in the second thing, the egg cell fuses with one male gamete and produce embryo, and your embryo is diploid structure. Student, this is all about our female reproductive part. In the next class, I will detailed discussed about pollination and fertilization. Students, share this video, like my channel, subscribe my channel, and wait for the next video till I come and again provide you the new informations. Okay student, goodbye.